So, uh, good morning, session of BabyChakra. So, I'm the host, Ooha. I'm a nutritionist. So we are going to have a discussion on a really important topic. So, before we begin, I just want to give your audience into BabyChakra, what our platform is all about. So, BabyChakra is a pregnancy platform and a parenting platform. It is one of the it's a one woman and expecting parents. So we try to connect parents with the experts who bring research-based information to all. So on that note, I would like to kickstart our topic. Have an informative discussion today on planning a balanced, healthy pregnancy, and we have an amazing lineup of guest speakers with us. Please welcome Dr. Krina Pandya and Dr. Akash Patel. So, Pandya, would you please introduce yourself? I'm Dr. Krina Pandya. I'm a homeopath nutritionist and MD in alternative medicine. And I'm practicing in Ahmedabad, Gujarat from last 7 years. And right now I'm running an online clinic, which is a wellness clinic, which is some of everything with homeopathy, weight loss, and or metabolic diseases. I provide nutrition, diet, as well as exercise and homeopathic medicine for everything. Thank you. Thank you, ma'am. Would you please introduce yourself? Myself, Dr. Akash Patel. I am practicing in Surat, Gujarat, Me and Mummy Hospital since 13-14 years. And we are here doing all the type of gynec work like deliveries, high-risk pregnancy with pain deliveries, operations like all the laparoscopy operation from simple to cancer surgeries, infertility work, IVF. We are doing IVF at our center, Blossom IVF Center. And Me and Mummy Hospital is working since 35 years. So it is one of the reputed hospital of Surat, and I am working there since 13 years. Okay, thank you, Dr. Akash Patel. So thanks for just sparing some time to bring a lot of useful and helpful information to our viewers. So let's to the topic once again. We are going to discuss planning a balanced, healthy nutrition during pregnancy. It is important to eat a balanced diet, and even it's more important that you are pregnant. In the main source of nutrient, a balanced diet is just what a baby needs to grow correctly. To aim at eating at least 300 more calories a day than you normally. Let us discuss the best way to indulge in the conversation with our expert in the panel today in depth. So we shall just begin with a few questions. So, sir, the question is for you, Dr. Akash Patel. So, why is it important to diet during pregnancy? Diet is the most important factor that we can control during pregnancy. See, baby growth depends upon placental function and genetics. When a pregnancy occurs, there is implantation, and the process that occurs, it is very natural. And उसके बाद उसका ग्रोथ होता है, जो सप्लाई उसको जाती है, उसके ऊपर बच्चे का ग्रोथ डिपेंड करता है. तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डाइट. अगर मदर की हेल्थ इम्पोर्टेंट है, मदर का डाइट सही है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली लेते हैं, देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बेबी. सम पार्ट इज नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल. सपोज फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है कि जो बोलता है हम अच्छे से डाइट ले रहे, सब कुछ सही किया, जैसे बोला वैसे खाया, लेकिन बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ. तो उसका जवाब ये है कि डाइट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन डाइट के अलावा कुछ फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी का जो पार्ट है उसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट. दूसरा पॉइंट कि बेबी का जो ग्रोथ हो रहा है उसके साथ मदर का भी ग्रोथ होता है, उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ती, रिक्वायरमेंट बढ़ती है. तो दोनों के लिए प्रॉपर हेल्दी और बैलेंस डाइट जो
एक्सपर्ट की एडवाइस के एक लेना चाहिए. Thank you, Dr. Akash. So, is to Dr. Krina Pandya. What are the best nutrients for a pregnant woman? So for pregnant women, first comes folic acid, that is folate, which is very important. Antenatal, prenatal, you have to start taking it. And because first 28 days, and that is first 1.5 months, is most important to fetus should have folic acid to avoid the deficiency, neural tube defects, and all. Also for brain development, folic acid is very important. So it is the like folic acid should be first priority. Then calcium for bone and feet every for proper growth of a fetus. Calcium is also very important, so mother should take the extra calcium supplements and also calcium sources, that is dairy, then other millets, spinach, nuts, everything which has good source of calcium. Then comes protein. Protein is must for the fetal growth, like overall growth of like every cell has protein. So it is most important that fetus and mother both should take equal good amount of protein, around 70 grams, 60 to 70 grams of protein per day. Then comes vitamin D and other vitamins, which supplementation is definitely a good, it should be taken, which benefits more. But sources are also there for vitamin D, like mushroom and other sources. For vegetarians, there is very less. So sunlight exposure and supplementation is a good option. Apart from them, a balanced diet, that is macros and micros, that is carbs and fats are also very important. Please, I don't know why everyone is like, don't eat fat during pregnancy. Uh, Trust me, of course, don't have that extra ghee, but fats are really important for brain development, other visceral part of the body, so fetus, and even for mother, it is really good. So please have this. These are the main nutrients which should iron also. Iron definitely, because double quantity of iron is necessary during pregnancy. So these are major nutrients which should be needed by a pregnant woman during. I want to Thank you, say Dr. something. Krina. Yes, In first Yes. 3 months, we yes, give Dr. Akash. in first 3 months we give folic acid, and then Yeah. after 3 months we supply iron and calcium. Okay. Rest of the supplements are given on the basis of there is deficiency, or suppose vitamin D. If it is low, then we give supplement. Otherwise, calcium and folic acid till delivery and even in partum also. Yeah. Rest are macro are absolutely needed in Yes. higher side, like carbohydrate, fats, protein. But if we are going to supply, that is iron, calcium, and folic acid. Right. Okay. Okay. Thank you, Dr. Akash. So the question is, Dr. Akash, what amount of nutrition is required during pregnancy and can improve nutrition during pregnancy? Please repeat the question. The voice Uh, was cracking in between. yes, Dr. Akash. So what amount of nutrition pregnancy and how a pregnant woman can improve nutrition during pregnancy? Yeah, we have a nutritionist with us, so they are available always in each and every hospital right now. कोई भी हॉस्पिटल में आप देखो तो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है. और जब ये लोग नहीं थे तब घर पे थी हमारी मदर और मदर इन लॉ. दे वेर ये काम करते थे कि ये खाओ वो खाओ. तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से अभी मोस्ट ऑफ द पेशेंट को पता होता है कि क्या खाना है प्रेगनेंसी में. इवन मेरी 3 साल की डॉटर भी बोलती है ये बनाना हेल्दी है, ये हेल्दी है, वो हेल्दी है, ये अनहेल्दी है. तो एक हुआ नॉलेज कि क्या खाना और कितना खाना. तो ये मोस्टली सबको पता है कि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कुछ कैलोरी चाहिए, एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए, एक्स्ट्रा आयरन चाहिए. इम्पोर्टेंट है उसको एग्जीक्यूट करना. तो मेरे हिसाब से जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम डाइटिशियन का वो कंसल्टेशन करवाते हैं,
या कोई वो जो डाइट फॉलो करते हैं, तो वो डाइट इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट वो फॉलो करे उसको। तो फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, और थ्रू आउट 9 मंथ वो फॉलो करे और उसके बाद छोड़ दे, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक लाइफस्टाइल में आना चाहिए कि वो कंटिन्यू फॉलो करे और डिलीवरी के बाद भी फॉलो करे, बिकॉज डाइट इज कि आप अपने बॉडी को कुछ दे रहे हो, और जैसा आप खाओगे वैसे आपकी बॉडी बनेगी। तो बॉडी एंड माइंड आर बोथ कनेक्टेड। बॉडी अच्छी रहेगी तो माइंड भी अच्छा रहेगा। तो प्रेगनेंसी में बॉडी और माइंड दोनों अच्छा होना चाहिए। तो उसकी प्रिपरेशन प्रेगनेंसी से पहले होनी चाहिए। सपोज कि ओबीज है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट आर कंसीविंग ड्यूरिंग 20 to 30 ईयर्स, लेकिन ये अभी शिफ्ट हो रहा है आफ्टर 30 ईयर के बाद प्रेगनेंसी वाले बहुत पेशेंट है। 35 जो वर्किंग वीमेन है वो लेट प्रेगनेंसी प्लान करती है। तो जैसे एज बढ़ती है तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बिफोर प्रेगनेंसी दे शुड कंसल्ट अबाउट मेडिकल प्रॉब्लम्स, देयर कोई तकलीफ है कि नहीं। सपोज वेट ज़्यादा है तो वेट थोड़ा कम करे, और वेट कम करने में फैट लॉस। तो प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये सब not for during pregnancy, but should be a lifestyle in overall, in general. So the message is to improve your lifestyle before pregnancy, during pregnancy, and maintain it after pregnancy also. Thank you, Dr. Akash. So the next question is to Dr. Krina. Share a guide for all expecting moms about the best Sorry. So can you help share a guide for all expecting moms about? So, first of all, as soon as you wake up, you should have a glass of water and soaked nuts, because the nutrient, phytic acid is removed when you remove the skin, so you can better absorb the nutrients. Then have 1 glass of milk, and with that have any protein plus complex carbs breakfast like veg sprouts, masala sprouts, masala upma, vermicelli, wheat vermicelli. Then upma, idli, which again has protein and carbs like that. So those are the good options for breakfast along with milk. Okay, and then in mid morning snack you can have any kind of fruit, preferably banana, apple, then pomegranate, berries. You can have such kind of fruits. Coconut water also is a good option for mid morning snack. Then for lunch, you should have a complete balanced diet for thali. That is our Indian thali, which has dal, rice. You can have legumes also like chana, chole, then lobia, all one bowl, everything. And green veggies are most important, so don't skip on it. I know first 3 months will be crucial, hyper and like you feel nausea and all, but you can try making it tasty, or you can change little timings of your eating pattern and all. Work on it. Then you have to eat. You can have wheat roti. You can have other millet roti. There's no problem about it. So whatever you like it, that roti or that you should have, and rice is also good. With that, you can have sauteed veggies and all. Curd is very important. So if you can have this much in one balance, have it, or else you can have after an hour also curd and other veggies. You can have after an hour. So it depends on you. So after that, in evening snack, you can have again uh, uh, fritters, that is carrot fritters, makhanas, चिवड़ा, ड्राई फ्रूट चिवड़ा आता है, वो ले सकते हो। तो ऐसे ऑप्शंस है। If you are not too hungry, it depends on pregnant lady, like how much hunger she has. If she's full with the lunch, then it's okay. Or else she can have small meals like a little poha, idli, and appam, all that stuff also in the evening. There is no issue about it. Main thing is your calories should be good balanced. Whatever you're eating should be healthy. Okay, don't go for processed packaged food. घर पे वो
तली हुई चीजें बना के रख दी, वो खाना नहीं है. If you are eating healthy, घर का बनाया गरम खाना, it is okay if you are eating little more. There is no issue about it. मेन चीज है आपका अच्छा खाना जाना चाहिए, होल फूड जाना चाहिए. That is important. आइसक्रीम खा लिया, the worst thing which I see is, right sir, you must be also saying, right, that ice cream, the ice cream खाते हो, मतलब they start eating that, you want ice cream, they start the वो, that should not be that. And ये चीज होनी चाहिए. And dinner should be again light and with wholesome protein and carbs. So you can have dal, rice, and veggies. You can have veg khichdi, veg dalia, veg oats. Or if you don't feel full, you can have again roti, khichdi, and dal rice, dosa, uttapam. Such are good options for dinner. And night again, you can have haldi wala milk or any other milk. You can mix anything, dry fruit powder or anything, and have the milk. So this is the main menu, which I give to my clients also, and I prefer that this is a wholesome meal plan. You have to balance according to your needs. Am I audible? Yeah. Anything else if you want to ask? I want to add something. Yeah. In pregnancy, what happens? Patient go dietitian and nutritionist. They give all the choices, timing, and everything. And then what happens? The पहले की जो एक पैटर्न बनी हुई है उन लोगों की, कि अभी सुबह उठ के कुछ लोग ऐसे जो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते या वो लेट करते हैं, और तो वो पैटर्न जो है वो एक चेंज करना एक थोड़ा बड़ा टास्क रहता है इन लोगों के लिए. फिर वो पैटर्न चेंज नहीं, फिर खाने में कंटेंट कई बार टोटली डिफरेंट हो जाते हैं. सपोज जो कभी मॉर्निंग में कभी वो ब्रेड या बिस्किट ही खाते हैं, तो उन लोगों को वो पराठा या ये पोहा या फिर ये ओट्स या ये सब इंक्लूड करना डिफिकल्ट रहता है. तो डाइटरी चेंजेस जो सजेस्ट करते हैं वो एक ग्रेजुअल होना चाहिए. घर में जो बनता है उसमें से इंक्लूड होना चाहिए, और सबसे अच्छा कि हमको अच्छा लगना चाहिए टेस्ट में. अगर इडली कभी अच्छी लगती ही नहीं है, भले हेल्दी है या जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो इतने ऑप्शन जो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, और जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि वो ऑप्शन दे जो उनको अच्छा लगे और टेस्ट में अच्छा लगे. और उसके होता है कि डाइजेशन में क्या होता है, भले टेस्ट में अलग, लेकिन इनडाइजेशन होता हो या पेट में गड़बड़ होती हो, तो वो हर एक इंडिविजुअल का एक रिएक्शन एक फूड का डिफरेंट होता है. सपोज कि किसी ने मिल्क लिया, फर्स्ट 3 मंथ में बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं, और दोनों साइड से कंप्लेंट होती है, एक पेशेंट की और एक जो साथ में उसके रिलेटिव है. सपोज मदर इन लॉ है, वो बोलती है कि ये दूध नहीं पीती है, और वो बोलती है मुझे दूध अच्छा नहीं लगता अभी. तो ये दोनों में हमें बैलेंस करना है कि सपोज मदर इन लॉ बोलती है दूध इज गुड, मिल्क इज अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, तो उस टाइम उसको एडजस्ट करना है कि मिल्क वाली या कोई भी दूसरी चीज, जो मिल्क में से जो मिल है वो कोई दूसरी जो चीज है उसमें से वो ले. तो एट दैट टाइम दे कैन हेल्प डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कि इसमें ये अच्छा नहीं, तो क्या खाए अभी उस टाइम पे. और वो टाइम ही ऐसा होता है फर्स्ट 3 मंथ का. एवर्जन ऑफ फूड इज द नॉर्मल थिंग, कि टेस्ट अल्टर हो जाना, खाना अच्छा नहीं लगना, तो ये सब चीजें नॉर्मल है. और लास्ट के मंथ में जैसे पेट बहुत बड़ा हो जाता है, तो स्टमक ऊपर पुश हो जाता है, थोड़ा भी खाए तो ऊपर आ जाता है, एसिडिटी होती है, तो ज्यादा नहीं खा पाते, तो थोड़ा कम खाए. तो ट्विंस से उसको ज्यादा खाने से वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसको भी जितना भी खाए उसको डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है. और ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में इंटेस्टाइन की मूवमेंट, स्टमक की जो मूवमेंट है, एम्प्टिंग टाइम वो कम हो जाता है, तो दोपहर का खाया भी शाम तक अंदर पड़ा हुआ होता है. और आयरन कैल्शियम की गोलियां साथ में, तो उससे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट है. तो ये सब चीजें एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, और उसमें कॉन्स्टेंटली डॉक्टर की या डाइटिशियन की हेल्प से सब हो सकता है. Personalized diet plan is required.
Very personalized. या पर्सनलाइज्ड एंड वो पेशेंट को ज़्यादा जरूरी है कि वो खुद को समझे कि ये अच्छा लगता है और मुझे सूट करता है, और एक फूड कॉन्शियसनेस कि ये फूड जो है वो मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे इसमें से क्या मिलेगा। आप कहीं पे भी जाओ, कोई किसी का घर भी या प्रेगनेंसी में कहीं गए और कुछ ना कुछ ऑफर होता है, तो जब ऑफर होता है तब देखो कि ये फूड मुझे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। थोड़े क्वेश्चन ही पूछने होते हैं रादर देन डायरेक्टली ईटिंग, ये भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा। तो पहला कि ये फूड अच्छा है मेरे लिए, जरूरी है ये खाना, अगर ये जरूरी है तो खाओ, जरूरी नहीं है तो यू कैन अवॉइड इट। फिर उसमें क्या होता है कि फिर इमोशन आ जाते हैं, नहीं ये तो मुझे खाना है, मैंने कभी से खाया नहीं है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब से फाइट चालू रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन इवन आफ्टर, बाद में भी। तो हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ा फूड कॉन्शियसनेस और एडजस्टमेंट इज पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। Ooha? You are not audible, Poha. You are not audible. So thank you, Dr. Akash and Dr. Krina, for joining us today. And I would also like to thank all the viewers who have joined us today. Thank you for all the tips you have provided to the viewers. Thank you. Thank you so much. Are you there? She is not audible, I think so.